Hello students. So today we are going to start with a very important topic of admission of a partner. The topic name is revaluation account. So this is in the continuation of the third topic. This topic is the fourth one. So let's start with this. So today I am going to talk about the revaluation account in a brief. So revaluation account. What is revaluation account? The alternative name of revaluation account is profit and loss adjustment account. It is a nominal account which is prepared in the books of the business to record all the expenses in the debit side and income on the credit side. It refers the revaluation profit when the sum total of credit side is more than the sum total of debit side, and revaluation loss when the sum total of debit side is more than the sum total of credit side. In the both the conditions, whether there is a profit or loss, it should be distributed between the partners. And when I say partners, so it means the old partners in their old profit and loss sharing ratio. So let's begin with this. So today, revaluation account. So revaluation account, as I mentioned, that expenses are recorded in this side and income are recorded in this side. So increase in assets, decrease in liabilities, unrecorded assets is, I assume this as team A. Increase in liabilities, decrease in assets, unrecorded liabilities caused a loss, and I'll consider this as B. So if A is greater than B, then there is a revaluation profit. And if B is greater than A, then there is a revaluation loss. In both the condition, it's need to be distributed between the partners, and when I say partners, it means the old partners in their old profit and loss sharing ratio. Now let's focus on the journal entries. Journal entries बहुत सिंपल होते हैं, मैं आपको समझाऊं, और इस स्लाइड पे हम फिर से वापस आएंगे. जैसे journal entries मैं बताऊं, for recording increase in liabilities, decrease in assets and unrecorded liabilities. So the entry should be revaluation account debit to increase in liabilities, to decrease in assets, to unrecorded liabilities. Next one is for recording increase in assets, decrease in liabilities and unrecorded assets. So the entry is increase in assets account debit, decrease in liabilities account debit, unrecorded assets account debit to revaluation account. Next, when there is a revaluation profit, so the entry should be revaluation account debit to partners capital account. When the total of the credit side is exceeding the total of the debit side. And when there is a revaluation loss, so when the total of the debit side is greater than the total of the credit side, so the journal entry is old partners capital account debit to revaluation account. Let's learn this. इससे हम learn कर सकते हैं. देखो ledger account है आपका, इससे हम journal entries कैसे बनाते हैं. So whatever things like ये जो B वाला part है, where I recorded increase in liabilities, decrease in assets, unrecorded liabilities. जब आप इसको ledger से journal में करते हो, तो ये जो डेबिट में है इसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं. तो नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ठीक है सर, फाइन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज लिखा हमने, टू डिक्रीज इन एसेट्स लिखा, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज लिखा, ये हमारे डेबिट में है, तो इसको हमने क्रेडिट में कर दिया. लेकिन डेबिट में क्या करेंगे? तो बेटा जी जिसका अकाउंट बना रहे हो आप, किसका अकाउंट बना रहे हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो इसको फिर से समझते हैं. अब देखो इसको क्या करना है, जो आपके पास डेबिट में है उसको क्रेडिट में लिख देना है. तो डेबिट में किसको लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट की. तो जर्नल एंट्रीज क्या बन जाएगा आपका? जर्नल एंट्रीज बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट. फिर से देखते हैं. इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो आपके पास क्रेडिट साइड में है रिवैल्यूएशन अकाउंट के, जब इसको जर्नल में ट्रांसफर करेंगे आप तो क्या करेंगे? बेसिकली ये डेबिट में चला जाएगा. तो क्रेडिट किसको करेंगे आप? अगेन द रिवैल्यूएशन अकाउंट. द अकाउंट इन विच दिस ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, उसको आपको रेस्पेक्टिव वैल्यू के साथ कंसीडर करना होगा. तो एंट्री क्या हो जानी है? फिर से एंट्री हो जानी है इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब आप देखें फिर से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री आपने करा? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहां क्या करा? डेबिट साइड में था, क्रेडिट में कर देना है. तो डेबिट में किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को. तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा लर्न करने के लिए. सो आपने एंट्री क्या पास करी? प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब आती है एडजस्टमेंट की बारी. एडजस्टमेंट बहुत ही एसेंशियल है एज फार एज द
दिस टॉपिक इज कंसर्न, क्योंकि क्वेश्चन तो हम कर लेंगे लेकिन क्वेश्चन से पहले जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बात करूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब टू मेंशन हो तो क्या करेंगे? whenever 2 is mentioned, so you can take the difference, you can take the difference. Now when I say difference, इसका मतलब है कि you have to compare the maximum with the minimum. I'll just take an example for this in order to make it clear. Suppose this is your balance sheet and in the asset side, furniture is given for rupees 1 lakh and in the adjustment furniture is increased to 1,20,000. See, 2 is mentioned, then this is the maximum amount which is being compared with this amount. So you find there is a difference of 20,000 and your furniture is being increased by 20,000. तो इसके लिए एंट्री क्या पास करने वाले हो आप? इसके लिए एंट्री पास करने वाले हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, furniture account debit by 20,000 to revaluation account. और revaluation account में कहां लिखोगे आप? revaluation account में आपने furniture to revaluation लिखा है तो यहां आपने लिखना है by furniture account. All right. So moving to the next adjustment, suppose if buy is given, whenever buy is given, so take the actual amount. Just take an example. Suppose if the balance sheet is given and in the asset side of the balance sheet, suppose furniture is given. Furniture is given for rupees 1 lakh and in the adjustment if it is mentioned that furniture is increased by rupees 1,20,000. If you could compare the previous condition, absolutely same, but there is only one difference. There I have used the term to and here I have used the term by. So what does it mean? 1 लाख का जो फर्नीचर था, now it goes up to 2,20,000. So there is a difference of this 1,20,000. तो फर्नीचर कितने से इंक्रीज हो जाएगा आपका? 120 से. So whenever buy is mentioned, so take the actual amount. So again the entry should be, the journal entry should be furniture account debit to revaluation account. So the journal entry should be furniture account debit by 1,20,000 okay, and while posting to the revaluation account, it should be here in the credit side by writing by furniture account. And the value would be again 1,20,000. I hope you understand. Now, third condition, if overvalued or undervalued. So this is actually a mistake. ये क्या होता है? Mistake होता है. हमने rectification of errors class 11th में करा था कि जब भी कोई value को overvalued कर देते हैं या undervalued करते हैं, so this is a matter of mistake and need to correct it. तो suppose आपके पास किसी value को हमने overvalue कर दिया. Overvalue का मतलब excess दिखा दिया है. Undervalue का मतलब हमने कम दिखा दिया है. तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा in order to understand the original price. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? Whatever given book value is there into 100 upon 100 plus rate.
मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, जैसे ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, दिस इज योर एसेट साइड, एंड इसके साइड में आपके पास मशीनरी की जो वैल्यू है वो 1,20,000 की है। नाउ एडजस्टमेंट इज मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप? बहुत सिंपल है, हमारे पास जो गिवन बुक वैल्यू है वो कितनी है? 1,20,000 की, इंटू 100 upon 100 plus rate, and what is the overvalued rate? 20%. So 20% of 100 would be 20. तो आप जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाके। So the value would be 1 lakh. So now if 1 lakh is the original value and the book value is 120, so it means in order to correct it we have to reduce the machinery by 20,000. तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे आप? जब भी मशीनरी को रिड्यूस करेंगे, एसेट्स को रिड्यूस करेंगे, सो द एंट्री शुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज वी आर करेक्टिंग हियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड द वैल्यू इज ऑफ 20,000 टू मशीनरी अकाउंट। ये भी वैल्यू कितनी हो जानी है? 20,000 की। ऑलराइट, दूसरा है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड की हम देखें, इसके लिए फॉर्मूला क्या मैंने बताया? ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए गिवन बुक वैल्यू इनटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, दिस इज द बैलेंस शीट एंड राइट हैंड साइड इज योर एसेट साइड। सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपके पास मशीनरी 40,000 का है और एडजस्टमेंट में है मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। यहां क्या था? ओवर वैल्यूड था, यहां क्या है? अंडर वैल्यूड है, मतलब हमने कम दिखा रखा है, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो यहां आपके पास गिवन बुक वैल्यू कितनी है? 40,000 की है। आपके पास अंडर वैल्यूड परसेंटेज कितना दिया? 20% का। सो 100 माइनस 20% ऑफ 100 दैट इज 20। सो इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 50,000 की। तो जिसकी वैल्यू 50 की होनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक आपने इसको कितने में दिखा दिया है? 40,000 का दिखा दिया है। सो इसका मतलब है कि इसको आपने 10,000 से कम दिखाया है। तो इसको इन ऑर्डर टू करेक्ट इट, आपको मशीनरी की वैल्यू 10,000 से इंक्रीज करने की जरूरत है। सो द जर्नल एंट्री शुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट to revaluation account $10,000 only. All right. Now moving to the next adjustment. Now when the assets taken over by the partner, तो इसमें तीन कंडीशंस आ जाएंगी। When the assets taken over by the partner, so there are three conditions. पहला कंडीशन क्या होगा कि जब assets taken over by the partner has no change at all। मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या कोई भी एसेट लेके जा रहा है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए की है और 10,000 रुपए की वैल्यू को लेके जा रहा है, सो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। पहला मैंने कंडीशन यही लिया है, व्हेन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द वैल्यू इन व्हिच द पार्टनर इज टेकिंग ओवर इज सेम। तो सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स कर लोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड कंडीशन है कि व्हेन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज लेस देन द वैल्यू एट व्हिच द पार्टनर इज टेकिंग ओवर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बैलेंस शीट है एंड द राइट हैंड साइड इज योर एसेट साइड। फर्नीचर इज गिवन एज 10,000। मिस्टर ए इज टेकिंग ओवर द फर्नीचर एट 12,000। तो आप देख सकते हो कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपए की है, लेकिन मिस्टर ए कितने में लेके जा रहा है इसको? 12,000 में। सो बेसिकली द फर्म इज रिसीविंग 2,000 मोर, और यू कैन से कि फर्नीचर की जो वैल्यू हमारी थी, इफ यू कुड कंपेयर विद द प्रीवियस वैल्यू विद द करंट वैल्यू, सो फर्नीचर की वैल्यू 2,000 रुपए से इंक्रीज हो गई है। तो जर्नलिटीज क्या करेंगे आप? पहली फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? सिंस इट इज बीइंग टेकन ओवर बाय द पार्टनर एट अ प्राइस ऑफ 12,000, तो आप एंट्री पास करने वाले कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सिंस यहां मिस्टर ए का नाम गिवन है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह आप यहां लिखेंगे मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, व्हेन द बुक वैल्यू इज मोर, आई मीन फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास एसेट साइड में बैलेंस शीट के गिवन है 10,000 का, एंड इफ इट इज टेकन ओवर बाय मिस्टर ए एट अ प्राइस ऑफ 9,000। तो पहले आप देखिए कि इसकी जो वैल्यू थी बुक वैल्यू वो 10,000 की थी, अब कितनी हो गई? 9,000 की हो गई। सो देयर इज अ रिडक्शन ऑफ 1,000। तो पहले इस रिडक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे। सो द एंट्री शुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट
1000, 1000. And then when it is being taken over by the partner, Mr. A, so the entry should be A's capital account debit to furniture account. ये भी बहुत एक अच्छा adjustment है. Moving to the next. Suppose if there is an unrecorded, unaccounted, unforeseen assets, then what you do? If there is an unrecorded, unaccounted, unforeseen liabilities are there, then what you do? So the journal entries, as far as the unrecorded assets are concerned, so the journal entry is unrecorded assets account debit to revaluation account. And for the liabilities, the entry should be revaluation account debit to unrecorded liabilities account. When the partner's personal expenses paid by the firm, so whenever partner's personal expenses, if paid by the firm, so the entry should be concerned partner's capital account debit to revaluation account. And suppose when business expenses are paid by the partner, so it becomes a liabilities for the organization. Why concerned partner's capital account is being debited? Because whenever partner's personal expenses, if paid by the firm, so it becomes an assets. Why assets? Because we are expecting that payment to be recovered from that concerned partner. That's the logic why concerned partner's capital account is being debited. But when business expenses are paid by the partner, so it becomes a liabilities. Then we are liable to pay, we refers to the firm, are liable to pay to the partners, and hence the journal entry should be revaluation account debit to concerned partners capital account. Now, treatment of workmen compensation reserve. ये हमने पहले बात कर ली थी इससे प्रीवियस वाले स्लाइड में. इसमें दो कंडीशंस में रिवैल्यूएशन अकाउंट इफेक्ट करेगा. वो कंडीशन क्या होगा? पहला कंडीशन, when the claim is greater than available reserve. Suppose, let's take an example that they have given you balance sheet, and in the liability side, which is the left hand side, workmen compensation reserve is given as rupees 10,000 rupees, and in the adjustment it is given that claim on workmen compensation reserve is 12,000. So here you find the claimed amount is more than the available amount. So I am just talking about the excess value, the difference between the claimed amount and the available amount. So for this, since the liabilities is increasing, so in the revaluation account, debit side, you can write to provision for workmen compensation claim. Compensation claim, and the value would be 2,000 rupees. आप इसके जर्नलिटीज जानना चाहोगे तो जर्नलिटीज भी बहुत सिंपल है. So journalities is workmen compensation reserve account debit with the available value, that is of 10,000. Revaluation account is being debited with the difference between claimed and availability. So that is 2,000. To provision for workmen compensation claim. Got it? Next one is, second condition क्या हो सकता है कि when we have to create a claim for workmen compensation. What does it mean? Previous वाले में हमारे पास कुछ availability थी, and that available amount is being compared with the claimed amount, and we find the claim is greater than the available amount, तो हमने ये करा. लेकिन suppose ये वाले कंडीशन में हमारे पास अवेलेबिलिटी कुछ भी नहीं है. वी डोंट हैव एनी अवेलेबल अमाउंट एज फार एज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज कंसर्न. वी जस्ट हैव टू क्रिएट इट, देन इट बिकम्स अ लायबिलिटीज. ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज हो जाएगा. और इसके लिए फिर आप एंट्री पास करोगे. जैसे मैं एक वैल्यू के साथ ले लेता हूं, से 5,000, तो इसकी जर्नलिटीज क्या करेंगे आप?
revaluation account debit to provision for workman compensation claim account. And if you could write in the revaluation account, so definitely it should be there in the debit side. यहाँ आप to provision for workman compensation claim लिख सकते हैं and that is for 5,000 rupees. Very important adjustment. Now moving to the next, this is belongs to the investment fluctuation reserve. ये भी हमने पिछले वाले स्लाइड में, पिछले वाले सेशन में इसको डिस्कस कर लिया था. इसमें पहला है when the market value of investment is more than the book value. When the market value of investment is more than the book value, let's take an example. Suppose ये बैलेंस शीट के एसेट साइड है एंड हमारे पास इन्वेस्टमेंट यहां गिवन है से 6 लाख रुपीस का और एडजस्टमेंट में इफ इट इज गिवन दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज से 6,20,000. So here you find the market value is exceeding the book value. So this is your book value, and if you compare with the market value, so you find that your market value is greater than your book value by 20,000. So the entry should be investment account debit to revaluation account. Investment account debit to revaluation account. And second entry would be revaluation account debit to again partners capital account. Second condition is when there is a decrease in the value of investment more than the available reserve. Again, I like to use the same example over here. Suppose this is your balance sheet and in your asset side investment is given rupees say 6 lakh rupees. Investment fluctuation reserve is given in the liability side for say 1 lakh rupees, and in the adjustment if it is given if it is given that market value of investment is rupees 4.5 lakh. So this is your book value, this is your market value. So book value was 6 lakh and the market value is only 4.5 lakh. So if you could compare, you find there is a difference of 1.5 lakh and the available amount is here is only 1 lakh. So basically if the market value of 4.5 lakh is compared with the book value of 6 lakh, then you find the difference of 1.5 lakh, and here the available amount of investment fluctuation reserve is only 1 lakh. It means 50,000 is considered as a loss for the organization. So recording this, the entry should be revaluation account debit to investment account. Why loss? I am saying because whenever the investment is declined, so the entry should be revaluation account debit to investment account. And yes, of course, investment is an asset, and when declined, it is a matter of loss for the organization. सेकेंड एंट्री मैंने नहीं लिखी है, जान के नहीं लिखी क्योंकि हम अभी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. तो बेसिकली प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए भी मैंने बताया कि इट इज अ मैटर ऑफ बेसिकली प्रॉफिट. तो इसके लिए मैंने आपको एंट्री बता दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और इसके लिए सेकेंड एंट्री हो सकती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. व्हेन आई से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट मींस द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और ये जो 50,000 का अमाउंट है दैट्स नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. नाउ लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट, क्रेडिटर्स. Very important point. Creditors. So when the less payment is made to the creditors, of course when the creditors are declining, so the entry should be creditors account debit to revaluation account. दूसरे कंडीशन में जब हमारे को creditors को ज्यादा पे करना पड़ेगा, so the entry should be revaluation account debit to creditors account. So I wish you all the best. Thank you. See you in the next session of continuous session of revaluation account. Thank you.